एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बजट में है और जो अनाउंसमेंट वित्त मंत्री ने किया है वो बॉन्ड मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेमवर्क ऐलान किया जाएगा। बेसिकली इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद ये है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट लिक्विड हो, वेल डेवलप्ड हो, वो बहुत आवश्यक है किसी भी विकसित देश के लिए। हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बहुत बढ़ा है। आज की डेट में हम आई थिंक वी आर क्लोज टू 58.6 लाख करोड़ द बॉन्ड मार्केट विच हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल में बहुत बढ़ा है, पर उसको आगे भी बढ़ना और लिक्विडिटी उस पर होनी चाहिए। तो हमने 3 चीज़ें कही हैं। एक कि सेबी एक मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क ज़रूर बनाएगा, जिसके लिए उन्होंने एक वर्किंग कमेटी ऑलरेडी बनाई हुई है। मार्केट मेकिंग होता है कि दोनों तरफ से कोट्स लेकर के उसके पीछे का जो बॉन्ड है उसको उपलब्ध करवाना, वो मार्केट मेकर का काम होता है। तो बॉन्ड मार्केट में इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में मार्केट मेकिंग बहुत कम है। तो मार्केट मेकिंग अत्यंत आवश्यक है कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करे, ट्रेडिंग आराम से हो पाए। बाकी जो दोनों और जो मेजर्स बताए गए हैं, एक है कि दैट कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स का डेरिवेटिव अलाउ करना, और उसका जो फ्रेमवर्क है वो दोनों रेगुलेटर्स आरबीआई और सेबी, उनसे बातचीत भी हमारी भी हो रही थी और आपस में भी उनकी बातचीत हो रही थी। दे विल कलेक्टिवली मेक अ फ्रेमवर्क, बोथ ऑफ देम फॉर देयर ओन डोमेन्स। उसका ये फायदा होगा कि इंडेक्स में काफ़ी तरह के बॉन्ड्स होते हैं, तो कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी मार्केट मेकर हो, उसको बहुत सारे बॉन्ड्स का एक्सपोजर एक बार में मिल जाता है। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कैश मार्केट से जो अलग है कि इनिशियल अमाउंट कम देना पड़ता है और ज़्यादा अमाउंट का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। दैट ऑल्सो एड्स टू लिक्विडिटी। ये सोच थी। द काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम वी हैव, in fact we have private sector bank, public sector banks. Do you think that we have sufficient appetite in the market to allow more FDI in the public sector banks? See, let me put it this way. Currently, the bank credit to non-financial sector is about 56% to the GDP. And many countries, it is anywhere between 150 to 200. And most of the countries have developed through bank credit. There is no country who just became developed country without anything. Now, bank credit is crucial. That is required. Now, for that, people need to save. Okay, that is savings. How the savings are translated into investments. Now we need, and then people also need to be provided the credit. Now, currently, we have anywhere between 3 to 350 million people who are credit excluded. They are financially included, but credit excluded. Our challenge, if a country's challenge, is to ensure that they also get credit. Now, for that, we need many institutions. Could be bigger, could be medium size, could be smaller. Right. And our country is so big, you require all kinds of banks with all kinds of variants in different parts of the country. That's all. Okay, one question on the announcement related to restructuring of PFC and REC, which is essentially an NBFC. Why has government reached on this conclusion? See, the government now announced that I wanted to rationalize this. You know, perhaps in my view, PFC, RFC does more or less same financing of power sector, and REC is the subsidiary of PFC. Okay. REC is the subsidiary of PFC. Right. So the wholly owned company and the subsidiary doing the same business, I think perhaps may not make much sense to the government, because there is not better utilization of available capital. Ultimately, for financing larger projects, more number of projects, it's better that you have a single entity, and then they used to take the capital will be much efficiently utilized. Perhaps that is the one reason why they are now looking at it, rationalization of these two institutions. तो क्या इसका मतलब ये भी है कि आरईसी पीएफसी का मर्जर हो सकता है, या फिर आरईसी या पीएफसी को किसी दूसरी कंपनी के साथ जो पावर सेक्टर में उसको मर्ज किया जा सकता है? I don't think so. There is any proposal to divest either one. Okay. No, I'm not talking about divestment, sir. I'm talking about merger in the same space. See, these two are there. Two are owned by the same ministry. Okay. Government, the Ministry of Power owns both the PSUs. So they will take a decision how to better do it. मुझे याद है कि जब आप केपेक्स को रिव्यू कर रही थी मिनिस्ट्रीज के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, तो आप न्यू ग्रोथ ड्राइवर सर्च कर रही थी, कौन कौन से न्यू सेगमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे केपेक्स बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है।
अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन से न्यू सेक्टर्स हम देखेंगे जहाँ पे केपेक्स ग्रोथ हम देख सकते हैं FY27? तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा। तो बजट में ही, if you know, there is a para in which ma'am has said today that so couple of things I would say. There are 7 high-speed rails announced in the budget today. 7 all at one go. There is 1 DFC. There is a whole section on sustainable movement and cargo outside of the roads, which is inland waterways, 20 national waterways, coastal shipping of cargo. So there are all these growth drivers which are lying there waiting for the potential to be tapped, and we hope to tap it.